सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राइटर्स ऑफ ऑल टाइम के बारे में, एंड दैट इज लियो टॉल्स्टॉय। सबसे पहले अगर हम देख लें तो ये एक रशियन लिटरेरी जाइंट थे, एंड इनके फेमस टेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें दैट इज वॉर एंड पीस, अना कैरेनिना एंड अ कन्फेशन। सो ये कुछ इनके फेमस टेक्स्ट हैं और ये बेस्ट नोन है फॉर हिज एपिक नॉवेल्स। उसके अलावा अगर बात करें उनके जो इंट्रिकेट नैरेटिव्स थे, फिलोसॉफिकल डेप्थ एंड इंसिसिव एनालिसिस ऑफ सोसाइटल इश्यूज, जो कि सीमेंट करते हैं उनकी लेगेसी को एज अ मास्टर ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन। सबसे पहले अगर हम इसके देखें तो इनके बारे में हम क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं, दैट इज इनकी लाइफ के बारे में, इनका टाइम पीरियड, करियर एंड इनके वर्क्स, बुक्स, नॉवेल्स एंड प्लेस, मेजर थीम्स एंड लेटर ईयर्स एंड डेथ। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। अगर इनके बारे में हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर एजुकेशनल जर्नी में हम इनकी लाइफ और इनके वर्क्स के बारे में कवर करने वाले हैं। एंड ये एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर है रशियन लिटरेचर के, एंड ये एक पायनियर है ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन। इस वीडियो में हम इनकी लाइफ वगैरह के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं और टाइमलेस थीम्स के बारे में, जिस पर्टिकुलर थीम्स को इन्होंने फॉलो किया है। वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर हिज मेजर नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड लास्टिंग लेगेसी। सो लेट्स बिगिन विद हिज एक्सप्लोरेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हिज लाइफ। वो उनका जन्म होता है सितंबर 9 में 1828 में। तो आपको मेनली ईयर याद रखना होता है, डेट इज कि उनका जो जन्म हुआ था वो 1828 में हुआ था एट द फैमिली एस्टेट ऑफ यासनाया पॉलियाना इन तूला प्रोविंस, रशिया। ही वॉज द फोर्थ ऑफ फिफ्थ 5 चिल्ड्रन बॉर्न टू कॉर्नेट निकोलिया। इनके बारे में बताया गया है कि वो फोर्थ चाइल्ड थे और उनके मदर एंड फादर का नाम बताया गया है। फादर्स नेम वॉज निकोलिया एंड द मदर्स नेम वॉज मारिया। उनकी जो मदर थी डाइड, मतलब उनकी डेथ हो जाती है when he was just 2 years old and his father passed away when he was 9 years old. बहुत ही जल्द ही, मतलब जब उनकी अर्ली स्टेज थी, मतलब उनकी जन्म जब हुआ था उसी समय उनके जो है फादर और मदर की बहुत ही जल्द में जो है डेथ हो जाती है, लिविंग हिम एंड हिज सिबलिंग्स टू बी रेज्ड बाय रिलेटिव्स। तब उनका जो ओवरऑल ग्रोथ हुई थी तो वो किसके साथ हुई थी, अपने रिलेटिव्स के साथ, और उनको जो टेक केयर किया था दैट वाज टेकन केयर बाय द रिलेटिव्स। डिस्पाइट दिस अर्ली हार्डशिप, जो उन्होंने जो रिसीव करी थी एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, उन्होंने अटेंड करी थी काजन यूनिवर्सिटी में स्टडी लॉ एंड ओरिएंटल लैंग्वेज को, बट लेफ्ट विदाउट कंप्लीटिंग हिज डिग्री। तो उन्होंने जल्द ही अपनी डिग्री को कंप्लीट भी नहीं किया था, उससे पहले एजुकेशन को छोड़ दिया। फीलिंग डिसइल्यूजन्ड विद द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग हिज अर्ली एडल्टहुड, जो टॉल्स्टॉय थे उन्होंने लेड किया था एक लाइफ ऑफ लेजर, frequently gambling and socializing, but he also began to develop his literary talents, which would soon define his legacy. 1862 में टॉल्स्टॉय जो है उन्होंने मैरी कर लिया था, शादी कर ली थी उन्हें सोफिया के साथ, with whom he had 13 children. सोफिया जो वो प्ले करती है एक बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल उनकी लाइफ में, मैनेजिंग हिज एस्टेट एंड असिस्टिंग हिम विद हिज लिटरेरी वर्क। उनकी जो मैरिज है हाउएवर वाज ऑफन स्ट्रेन्ड ड्यू टू टॉल्स्टॉय इवॉल्विंग फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स, which increasingly diverged from Sophia's more conventional views. With this, we are coming to the time period. उनके जो लाइफ एंड करियर थे वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल क्लाइमेट ऑफ 19th सेंचुरी रशिया। उनका जो पीरियड है वो मार्क किया जाता है बाय सिग्निफिकेंट अपहेवल एंड चेंज, इंक्लूडिंग द emancipation of the serfs in 1861 and the subsequent efforts to modernize Russian society. उनका जो स्ट्रगल है बिटवीन ट्रेडिशनल अरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज एंड द पुश ऑफ सोशल रिफॉर्म्स प्रोवाइड करते एक रिच बैकड्रॉप फॉर टॉल्स्टॉयज एक्सप्लोरेशंस ऑफ मॉरल एंड फिलोसॉफिकल इश्यूज। उनका जो इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर है ऑफ द टाइम was also shaped by the ideas of the Enlightenment and the rise of existentialism, which questioned established norms and sought to understand the human condition. उनका जो इन्फ्लुएंस थे आर एविडेंट इन टॉल्स्टॉयज वर्क, जो कि ऑफन ग्रैपल करते हैं विद द प्रोफाउंड क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, डेथ एंड द नेचर ऑफ हैप्पीनेस। और उनका जो एक्सपीरियंस है एज अ सोल्जर इन द क्राइमेन वॉर एंड हिज ट्रैवल अक्रॉस यूरोप, फर्दर जो वो ब्रॉडन करता है उनके पर्सपेक्टिव को एंड इन्फॉर्म करता है उनकी राइटिंग को। नेक्स्ट वी हैव हिज करियर्स एंड वर्क्स। अगर उनकी हम बात करें तो उनका जो करियर है वो बिगिन करता है 1850s में विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी। एंड इनके बारे में अगर हम और चीज़ें कुछ देखें दैट इज कि चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ, उनकी कुछ अर्ली वर्क्स जो है वर वेल रिसीव्ड एंड एस्टैब्लिश हिम एज अ प्रॉमिसिंग न्यू वॉइस इन रशियन लिटरेचर। However, it was his literary novels War and Peace and Anna Karenina
karenina या did cement and challenge readers around the world. उनकी जो एक्सप्लोरेशन है ह्यूमन नेचर के बारे में, सोसाइटी के बारे में एंड द क्वेस्ट ऑफ मीनिंग्स उनकी लाइफ में, उसने एक इनक्रेडिबल मार्क जो है किया था ऑन लिटरेचर एंड फिलोसफी। और उसके बारे में ये भी बताया गया इनके बारे में कि वो जो उनकी जो कमिटमेंट थी टू ट्रुथ एंड ऑथेंटिसिटी इन बोथ हिज लाइफ एंड हिज राइटिंग सेट्स हिम अपार्ट एज अ मोन्यूमेंटल फिगर इन लिटरेरी वर्ल्ड। उनका जो इन्फ्लुएंस है वो एक्सटेंड करता है बियॉन्ड लिटरेचर, रीचिंग इनटू सोशल एंड पॉलिटिकल रियल्स। उनके आइडियाज एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड सोशल रिफॉर्म वो इंस्पायर करते लीडर्स को लाइक महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग Jr., who saw his works a powerful call for justice and peace. Today, Tolstoy जो है उनका वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा essential reading है for anyone interested in understanding the complexities of the human condition and the moral questions that define our lives. With this, we are coming to the next part, that is books, novels and plays. So टॉल्स्टॉय का जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है वो एक वास्ट है और बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है। उनके जो दो मोस्ट फेमस नॉवेल्स है डेट इज वॉर एंड पीस एंड अना कैरेनिना, वो कंसीडर किया जाते हैं उनके मास्टरपीस ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। वॉर एंड पीस नॉट ओनली पोर्ट्रेज द ग्रैंड स्वीप ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बट ऑल्सो डेल्व्स इनटू द इनर लाइव्स ऑफ इट्स कैरेक्टर्स, ऑफरिंग अ प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन ह्यूमन नेचर एंड डेस्टिनी। अना कैरेनिना जो है is a tragic tale of love and societal pressures, capturing the intricacies of personal relationship and consequences of societal norms. In addition to these major works, Tolstoy जो है वो लिखते हैं बहुत सारे several other significant novels, including Cossacks, which draws on his experiences in the Caucasus, and Resurrection, a powerful critique of the Russian penal system and injustices of society. उनके जो शॉर्ट स्टोरीज है सच एज द डेथ ऑफ आइवन, आई थिंक इनका कुछ नाम आप पढ़ सकते हो, फैमिली हैप्पीनेस एंड द क्रूट्स सोनाटा फर्दर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उनकी एबिलिटी को कि वो एड्रेस कर सकते हैं डीप मॉरल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस विद क्लैरिटी एंड एम्पैथी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नाउ वी हैव द मेजर थीम्स। तो जो मेजर थीम्स उनके जो काम थे, जो उनके वर्क्स थे, वो किस पर्टिकुलर थीम पे रिवॉल्व करते थे। सो जो टॉल्स्टॉय के वर्क्स थे वो करेक्टराइज थे बाय देयर एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स थीम्स दैट रेजोनेट अक्रॉस टाइम एंड कल्चर। वन ऑफ द सेंट्रल थीम इन हिज राइटिंग इज द सर्च फॉर मीनिंग एंड ऑथेंटिसिटी इन लाइफ। In war and peace, characters grapple with questions of fate and free will, seeking to understand their place in the world amidst the chaos of war. In Anna Karenina, Tolstoy examines the conflict between personal desires and societal expectations, highlighting the tragic consequences of living inauthentically. Next we have his author major theme in Tolstoy's work is a critique of social and institutional injustices. Next we have his Korinka work, that is in Resurrection. He exposes the corruption and moral hypocrisy of the Russian legal and penal systems. उनका जो लेटर वर्क्स थे वो इंक्रीजिंगली रिफ्लेक्ट करते थे उनके कमिटमेंट को टू नॉन वायलेंस एंड पेसिफिज्म एज सीन इन द किंगडम्स ऑफ गुड इज विद इन यू, वेयर ही एडवोकेट्स फॉर अ रेडिकल रीइंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिश्चियन टीचिंग्स सेंटर्ड ऑन लव एंड नॉन रेजिस्टेंस टू एविल। टॉल्स्टॉय जो है वो डेल्व करते हैं इनटू द नेचर ऑफ हैप्पीनेस एंड ह्यूमन फुलफिलमेंट। उनकी जो डेथ है ऑफ आइवन द पर्टिकुलर वर्क वो पोर्ट्रे करते हैं a man's realization of the emptiness of life devoted to social status and marital success, ultimately finding peace in genuine human connections across his works. और टॉल्स्टॉय जो इनवाइट करते हैं रीडर्स को भी कि वो रिफ्लेक्ट करें अपने लाइफ्स के बारे में एंड द वैल्यूज दैट गाइड देयर एक्शंस। later years and death. So with this we are coming to his last years. So इनके जो later years थे जो अंडरवेंट करते एक profound spiritual transformation को, renouncing his wealth and aristocratic privileges to embrace a simpler, more ascetic lifestyle. He became increasingly critical of the Orthodox Church and organized religion, advocating for a return to the teachings of Jesus as a moral guide.
उनको जो पीरियड है ऑफ हिज लाइफ was marked by intense philosophical and religious inquiry, resulting in works like A Confession and The Gospel in Brief. नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं लास्टली, सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो। बट यार टॉल्स्टॉय के बारे में अगर हम बात करें तो टॉल्स्टॉय की जो लेगेसी थी वो बहुत ज़्यादा इमेंस थी, इन्फ्लुएंसिंग नॉट ओनली लिटरेचर बट ऑल्सो द सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट। उनको जो आइडियाज थे एंड नॉन वायलेंस है and social justice inspire करते figures such as Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. And his literary works continue to be studied and revered for their profound insights into the human condition. With this, we are coming to the conclusion now. So, with this, we are ending this video here only. Thank you for joining us on this journey through the life of and work of Leo Tolstoy. From his aristocratic origins to his profound philosophical inquiries, टॉल्स्टॉय जो है उनकी लेगेसी जो है कंटिन्यू करती है कि वो इंस्पायर करे एंड चैलेंज करे रीडर्स को अराउंड द वर्ल्ड। उनका जो एक्सप्लोरेशन है ऑफ ह्यूमन नेचर, सोसाइटी एंड द क्वेस्ट ऑफ मीनिंग इन लाइफ हैज लेफ्ट एन indelible mark on literature and philosophy. We hope this exploration has deepened your appreciation for Tolstoy and his timeless works. Be sure to like, subscribe and leave a comment, and if there is any of the queries you can leave the comment, and if you wanted some another writer to be presented on this channel, so do comment his name with the particular like the time period or something like the particular the Russian literature, if he belongs to Russian literature or some other literature. So do mention that, or if you are looking forward some metaphysical poets or some type of poets, so you can just mention in the comments. And if you have any of the queries in the if you have any of the queries, you can mention that also in the comments. Till then, stay safe, stay positive. Do follow my Instagram account also, and stay safe and thanks for watching. Bye bye.